Yes, we are now again connected. So I just want to complete this topic. So when we have so the web browser exactly determine the URL. First step is this, and browser asks DNS for the IP address of that, and DNS replies with IP address like this. This is 156.106.192.32. So DNS replies with the IP address that belongs to that particular web page. Yeah. Now the browser makes a TCP connection to port 80, that is the HTTP port for the connection. On this particular IP address से उसको web connection web पे से connection establish होगा, then it can send over a request asking for the file public product.html. Then you can, जब connection establish हो जाएगा, then you can send the request for the file. Then the server sends the file product.html. तो सर्वर जो है उसको उसके रिगार्डिंग जो है रिस्पॉन्स भेजेगा फाइल के रिगार्डिंग. देन द टीसीपी कनेक्शन इज रिलीज and the browser displays all the text in the product.html. The browser fetches and displays all image in the file. Server side पे क्या होता है? When the user types in a URL or clicks on the lines of hypertext, the browser passes the URL and interprets the parts between HTTPs and the next slash as a DNS. Yeah. So with the IP address of the server, the browser establishes a TCP connection to port 80 on that server. Then it sends over a command containing the rest of the URL, which is the name of the file on that server. The server then returns the file for the browser to display. इसमें भी कुछ स्टेप परफॉर्म होते हैं सर्वर एंड पे भी, जैसे accept a TCP connection from a client, get the name of the file requested, get the file from the disk, return the file to the client, and release the TCP connection. ये जो डिस्क में ही फाइल स्टोर होती है, जो बीच में आप डिस्क देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल हमारी स्टोर्ड है, यहीं से एक्सेस होती है फाइल वेब सर्वर. फिर वेब सर्वर उसको फिर टीसीपी को वेब क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है. दिस इज ऑल अबाउट द सर्वर साइड. वायरलेस वेब में आपका दो तरीके का होता है एग्जैक्टली वेब सिस्टम. एक वेब मोड होता है, एक आई मोड होता है. वेब इज द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द वेब. उसके बाद आपका आता है, ये हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ये आपका वेब का आर्किटेक्चर है, द वेब आर्किटेक्चर. एंड देन वी हैव ए आई मोड. बेसिकली ये आई मोड है. ठीक है, दिस इज द मॉडिफाइड वेब. बेसिकली ये हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. या हो सकता है क्लास में मैं डिस्कस कर लूँ इसको. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द. उसके बाद डिफरेंसेस हैं वेब और आई मोड में, ये भी हमें पूछा जा सकता है. वेब एंड आई मोड में क्या डिफरेंस है? दैट इज वायरलेस एक्सेस पॉइंट एंड आई. ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे. सर पार्ट बी के लिए हम लोग क्या कर लें, मतलब जो भी अभी 24 को हम लोग की क्विज होगी ना सर? एक दूसरे से कोई भी प्रोटोकॉल है वो दूसरे प्रोटोकॉल से लिंक करता है कहीं ना कहीं. ठीक है, ईमेल है, ईमेल में एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, टीसीपी सर्विसेज यूज होती हैं. ठीक है, इससे आपका एफटीपी प्रोटोकॉल है, उसमें हमने बताया था कंट्रोल कनेक्शन, डेटा कनेक्शन, दो अलग अलग लाइन होती हैं. ठीक है, लेकिन टीएफटीपी प्रोटोकॉल में सिंगल लाइन होती है. इस तरीके से आपको लिंक करना पड़ेगा. ठीक है जी सर. पढ़िए, कोई हाँ टफ नहीं है, बढ़िया हो जाएगा. ठीक है, ओके सर.
ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके।